हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं होंडा सिटी में बम्पर स्प्लिटर इंस्टॉल करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने ये बम्पर रैप किया था पूरा नीचे डिफ्यूज़र वाला पार्ट। उसके बाद लुक में बहुत डिफरेंट आ गया है, पीछे से एकदम स्पॉटी लुक दिख रहा है। तो उसमें थोड़ा लुक इन्हांस करने के लिए मैं स्प्लिटर इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये बॉक्स में देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये डिफ्यूज़र है दोनों साइड के, और साथ में स्क्रू से के वजह से हम लगा सकते हैं बम्पर में। तो ऐसा कुछ मिलता है। ये यूनिवर्सल आता है सभी कार के लिए सेम, पर ये मैंने कट किया हुआ है तो होंडा सिटी में लगाने के लिए। जो बम्पर में कंप्लीट फिटिंग आए उस वजह से उसका मेजरमेंट लेके इस तरह से मैंने कंप्लीट फिटिंग बैठ जाए उस वजह से कट किया हुआ है। तो ऐसा कुछ लगेगा लगाने के बाद। दोनों साइड के ऐसे सेम आते हैं। तो ये लगाने के बाद लुक में तो काफ़ी इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि ये पूरा पीछे से स्पोर्टी लुक लगेगा उसके बाद। और ये मैंने डिफ्यूज़र रैप किया था कार्बन फाइबर में, उसका भी फिनिशिंग देख लो आप। तो चलिए गाइस, मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक कैसा दिख रहा है।
स्प्लिटर इंस्टॉलेशन हो गया है दोनों साइड, और लुक आप देख ही सकते हैं। इस साइड पे देख लो। दोनों में नीचे 3 स्क्रू लगाए और डबल साइड टेप थी वो भी साथ में चिपकाई है। और स्क्रू लगाने का कारण यही कि तेज़ स्पीड में भी ये हिल ना पाए। और अगर आपको भी ये परचेस करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और लुक टोटली डिफरेंट लग रहा है अब तो, बहुत अच्छा लग रहा है।